राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, आप थे वहाँ पे। द मोमेंट स्क्रीन पे जब रामलला का पहला स्क्रीन के ऊपर उनका दर्शन जब दिखाया, तो वहाँ पे विद इन 1 सेकेंड ही वॉज द ओनली दिग्गज ओवर देयर, ही वॉज द ओनली राजा वहाँ पे थे। बाकी सब जितने भी थे ना, दे जस्ट वेंट इनटू ऑब्लिवियन. Everybody had tears in their eyes. Even Prime Minister Modi was present there. In fact, he went and did the pujan. So, do you think he, as the Prime Minister, should have been present? Why shouldn't he have been? What makes you ask me this question? Why should he have not been? Lekin we always require one common thread, जो मतलब सबको जागरूक करके एक उसकी मतलब हिंदुइज्म के लिए या अपने जो टेम्पल्स है, हमारे जो पूर्व परंपरा है, तो उसके लिए बोलने वाला या कुछ करने वाला कोई अगर आ जाता है, देन एवरीबडी गेट्स यूनाइटेड. Namaste and welcome to another insightful episode of the Viksit Maharashtra, Viksit Bharat podcast. Today we are honored to have with us one of India's legendary voices, a singer whose contribution to Indian music transcends time and genre. Anuradha Paudwal ji's journey spans devotional and playback music, earning her accolades like the prestigious Padma Shri. We'll explore her incredible journey, her thoughts on India's cultural revival, and her views on Maharashtra's significant role in it. Let's dive into the heart of Indian art, culture, and music with Anuradha Paudwal ji. Welcome to the Viksit Maharashtra, Viksit Bharat podcast, ma'am. Yes, sir. My first question to you will be about your journey. In 1973, you began your playback journey. So can you tell us any memories that you can recall from those? Yes, I was introduced in this industry by none other than Shri S.D. Burman ji through a shlok in film Abhiman. And then, of course, there were just 3 studios, so everyone came to know who has sung, or if somebody new has come. And then immediately I was called by Jaydev ji, then Kalyanji Bhai, and Lakshmikant Parlal, and so on and so forth. And that journey started. Ma'am, so over the years, how many movies have you sang your... To be very honest, I haven't counted all that, but they've been quite many. All right. So, ma'am, another question to you will be about the influence of Lata Mangeshkar ji on your work. So, in various interviews from time to time, you have said Lata Mangeshkar ji has influenced your work. Absolutely. Because I come from a family where my father was not too keen that I should join the industry, and not particularly fond of singing. My mother was. And but then in those days, it was not like what it is today. Like every family has 2-3 people singing in the channel or doing something to do with the social media or whatever. So, but I was very fond of Lata ji's songs, and I used to constantly keep on listening to her Bhagavad Gita and sing with that. So that has been my training part of it. I have not learned from anyone. Yeah, so she has she definitely influenced my singing. Okay. So, ma'am, that brings me to your conscious shift to devotional music. That was in the 90s when it happened. That was always my inclination, because in the film industry, you're constantly depending on somebody, for that song to become a hit. Either the film has to be a hit, or the hero-heroine have to be a hit, or the... sometimes you see, not all songs are a hit. Yes, ma'am. But I was lucky enough to, get so many songs in each film. I mean, 10 songs in a film, and all of them were a hit because they were well promoted. So, but that was not the case when it was in the film industry. There's 5 गाने, तो उसमें the producer and the music director, they used to decide कि इस गाने को promote करना है. So, बाकी गाने रह जाते थे. And my natural inclination also was towards devotional music. So, I was comfortable. So, ma'am, आपने अपने एक तरीके से कहा जा सकता है पीक
ऑफ योर करियर में आपने That ये is what शिफ्ट I had किया था? decided. That is what I had decided. Hmm. कि I didn't want to I didn't want to exit the film industry when the songs कभी एक आधा hit हुआ, एक आधा नहीं hit हुआ, ऐसा नहीं. When I'm at the peak, then I had decided that I would then turn to devotional. All right. Your transition has been phenomenal from choosing this genre. So, ma'am, how has spirituality shaped your music today? When we talk about it, over the years, you have had a very long career in this genre. So, how has spirituality shaped that? I was lucky enough because in T series there was a huge market, and T series was the only market at that time. Even today, with a huge repertoire pertaining to spiritual songs, because in the north and then they had the audio and the video, so they used to shoot also. Yes. So that was an added advantage that I got. And so when I turned to spirituality, spiritual devotional music, ऐसा नहीं था कि कि कहीं पे वो पॉपुलैरिटी लेवल लैकिंग था या उसका एक्सेप्टेंस लैकिंग था, ऐसा कभी नहीं हुआ. सो हमेशा से एक तो मार्केट भी रहा है, लोगों में वो रहा है कि डिवोशनल म्यूजिक. नहीं, वो तो हुआ ना, द वे इट वाज प्रेजेंटेड, और उसके बाद से ही टेम्पल टूरिज्म इतना बढ़ गया ना. आज जो हम देखते हैं तो उसमें मतलब दैट हैज हैड अ वेरी बिग पार्ट टू प्ले. इतने जो मंदिर घर घर में बैठे हुए आप देख सकते थे, तो ये कभी हुआ नहीं था. दैट वाज लाइक अ रेवोल्यूशन. जो 90s के बाद जो वैष्णो देवी और ये तमाम टेम्पल्स है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये गंगा जी की आरती है, और ऑल दिस टेम्पल्स, तो ये सब जगह शूट कर करके उनके बारे में मालूमात दे के भक्ति सागर एक प्रोग्राम आता था जी. तो आज भी लोगों को वो याद है. सो मतलब इट प्लेड अ वेरी वेरी बिग पार्ट अकॉर्डिंग टू मी. मुझे भी भक्ति सागर याद है बिकॉज आई ग्रू अप इन दैट एरा एंड आई यूज्ड टू वॉच. सो दैट वाज अ वेरी गुड शो टू इंस्पायर अस ऑल. मैम, स्पिरिचुअलिटी की बात अगर की जाए और आपने सिंस टेम्पल टूरिज्म की बात की, मैं ले जाना चाहूँगी आपको अयोध्या. इस साल जब जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, आप थे वहाँ पे. कैन यू टेल अस what were you feeling? We saw you get emotional there. So what was on your mind at that time? वो एक इमोशनल ही पल था, जितने भी लोग मौजूद थे. और उसके पहले तो बहुत सारे दिग्गज और डिग्निटरीज थे वहाँ पे. मतलब हिंदुस्तान के जितने भी डिग्निटरीज है वो सभी थे वहाँ पे. लेकिन द मोमेंट स्क्रीन पे जब रामलला का पहला स्क्रीन के ऊपर उनका दर्शन जब दिखाया, तो वहाँ पे विद इन 1 सेकेंड ही वॉज द ओनली दिग्गज ओवर देयर. ही वॉज द ओनली राजा वहाँ पे थे. बाकी सब जितने भी थे ना, दे जस्ट वेंट इनटू ऑब्लिवियन. एवरीबडी हैड टीयर्स इन देयर आईज. सो वो खूबसूरती है, एंड टू गेट अ चांस टू विटनेस दैट मोमेंट, आई थिंक इट्स मतलब लाइफ टाइम का एक अविस्मरणीय क्षण था. मैम, अगर आपसे पूछूं क्यों इतना इम्पोर्टेंट, मतलब हम सबको अलग तरीके से, बट आप बता सकते हैं आपको क्या क्यों लगा कि इतना इम्पोर्टेंट पल क्यों था वो? हर एक की अपनी अपनी जिंदगी में और कोई किसी को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई देवी को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई और किसी को मानता है. लेकिन हमारा जो बेसिक हिंदू की जो एक डीएनए में ही राम है, युग पुरुष है वो. सो राम इज, दैट इज वाई वी से कि हमारे जीवन में राम है. इफ यू आर हैप्पी, अगर इफ यू आर नॉट हैप्पी, वी से हमारे जीवन में कोई राम नहीं है. व्हाई डू वी से दैट? इट इज एप्लीकेबल टू एवरीबडी. आई डोंट नो वेदर यू हर्ड ऑफ दिस और नॉट, पर हम कहते कि जीवन में अब राम आया. मीन्स इज नॉट दैट राम मतलब आनंद. सो दैट इज वन कनेक्ट दैट ईच एंड एवरीबडी हैज, आई फील. अदरवाइज you can, it's not like a press of a button and सबके आंखों में से आंसू बहने लगे. It's not like that. What happened, that was a spectacular. मतलब हर एक के आंखों में से आंसू बह रहे थे और just wouldn't stop. तो ये this is inexplainable. मैम, आपने
डिग्निटरीज की बात की और काफ़ी सारे लोग प्रेजेंट थे, इंडस्ट्री के who's who, and everybody was present there. Even Prime Minister Modi was present there. In fact, he went and did the pujan. So, do you think he, as the Prime Minister, should have been present in Why the shouldn't he have been? What makes you ask me this question? Why should he have not been? बाकी सब तो why shouldn't he have been? Ma'am, I don't see any reason for him not being there. मैम अगर बात की जाए एक आपने जो प्रभु राम के साथ कनेक्ट बताया, सबका ही समवेयर और दी अदर कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली सबका है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अभी रिसेंट ईयर्स में अगर बात की जाए, हैव यू सीन नेशंस कॉन्शियसनेस में व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन, क्या आपने कोई डिफरेंस महसूस किया है? बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट Yes, ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि नो मैटर हाउ मेनी पीपल आर मतलब जो हिंदुस्तान में हिंदू कितनी तादाद में है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वी ऑलवेज रिक्वायर वन कॉमन थ्रेड जो मतलब सबको जागरूक करके एक उसके मतलब हिंदुइज्म के लिए या अपने जो टेम्पल्स है, हमारे जो पूर्व परंपरा है, तो उसके लिए बोलने वाला या कुछ करने वाला कोई अगर आ जाता है, देन एवरीबडी गेट्स यूनाइटेड. तो इस वजह से ऑन द वे द गवर्नमेंट हैज प्रेजेंटेड, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उन्होंने किया है, तो मतलब पुराने टेम्पल्स है ही, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे आज के तारीख में सम थिंग्स नीड टू बी प्रेजेंटेड इन अ न्यूअर वे, एक नए तरीके से. तो दिस आइडिया ऑफ कॉरिडोर वाज अ वेरी नाइस वन. पीपल आर अट्रैक्टेड, मतलब लाखों लोग जाते, जहाँ हजारों जाते थे, या आई वुड से जहाँ लाखों जाते थे और यहाँ आज करोड़ों जाते हैं. मैम, डू यू थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज बीन दैट फिगर जिसकी आप अभी बात कर रही थी टू पुश द No, of course. मतलब जितनी पब्लिसिटी, जितने सब जगह so much noise was being made about it, जितनी पब्लिसिटी हुई सोशल मीडिया पे, लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, तो डेफिनेटली मतलब वहाँ पे ऐसे हुआ है, तो पीपल आर बट नेचुरल गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट. मैम, योर ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग थ्रू आउट द कंट्री, जैसे सोमनाथ धाम हो गया इन गुजरात, वी हैव श्री जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी इन उड़ीसा. सो अक्रॉस द कंट्री ये सारे टेम्पल्स का समवेयर कॉम्प्लेक्सेस का रिजुविनेशन हो रहा है अंडर वेरियस स्कीम. देयर इज अ स्कीम कॉल्ड प्रसाद स्कीम. तो गवर्नमेंट कर रही है कि मोर एंड मोर पीपल शुड कम. यस, इट इज मोर टूरिस्ट फ्रेंडली. हाँ, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए दैट इज दे आर टेकिंग स्टेप्स फॉर दैट, इजंट इट? मतलब उस तरीके से कर रहे टू जहाँ पे पहले 500 लोग खड़े रह सकते थे, अभी 5000 खड़े रह सकते हैं. सो एज आई सेड, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है, दैट इज beautifully done. It's really nice. Ma'am, so like you said, most of these temples are being made tourist friendly. So do you think it serves the purpose of also connecting people with spirituality? Because पहले होता था कि हम जाते ही नहीं थी, जिसको सिर्फ interest था, that person would go to a dham yatra or anywhere they would go to such temples. Now that people, even if just to see a place they are going, somewhere or the other वो दर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो connect कर पा रहे हैं. There are museums which are being made in such complexes. But an incentive to invite more people, I would say. जितना बाकी जो तामझाम है वहाँ पे, it is an effort to invite more people. हाँ. Ma'am, since we are in Maharashtra right now, 12 Maratha forts recently made it to the UNESCO's World Heritage List, and also there is a renewed focus by the government in recognizing our cultural heritage when it comes to fort. Your comments? It's a good thing. It's a good thing. But at the same time, local people also need to respect that fact and be proud of the heritage. You know, कि ये उनमें भी आना चाहिए. Because government करेगा एक बार करके देगा, then after that it has to be looked after also by the locals.
मैम, डू यू थिंक लोकल्स के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा इससे जो क्रिएट होंगी या हो रही हैं अभी एज वी स्पीक, so do you think this effort by the government is somewhere or the other helping more and more people take care of their own heritage at the same time get employed? I don't know whether it is, but it should. Yeah. मतलब as one would think कि हाँ इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे है तो इनको मिलना चाहिए, बट एक्चुअली मतलब I won't be the right person to talk about it. All right. Ma'am, let us talk about your devotional music on YouTube. So I think कोई भी ऐसा त्योहार नहीं जाता है when we are not playing अनुराधा पौडवाल जी का भक्ति गीत just for the आरती or anything. हमें वो करना ही पड़ता है. Kind, I would say. So since आपका छठ गीत या गायत्री मंत्र जो लिटरली हम लोग रोज सुनते हैं, शिव अमृतवाणी, बहुत सारे व्यूज हैं अभी यूट्यूब में, तो आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी हैज मेड आर्टिस्ट्स मोर एक्सेसिबल नाउ एक ज़माना था जब हम कैसेट लगा के सुनते थे, अब एनी मोमेंट आई वांट टू हियर टू लिसन टू अ भक्ति गीत? Of course, yes. Of course, I think so, yes. Social media has played a big part in getting music to be accessible in any part of the world. But at the same time, it's a very easy access to everybody. जो एक ज़माना ऐसा था कि you were required, मतलब सुर चाहिए, ताल चाहिए, कुछ अभी आजकल कोई भी कंटेंट कहीं से भी डाल सकता है, which is I think, but anything for that matter has plus and minus. मैम, अगर आपके भजन्स की बात की जाए, आपने सेवरल लैंग्वेजेस में, गुजराती में, मराठी, हिंदी, संस्कृत, बंगाली, तमिल, उड़िया, ये सारी लैंग्वेजेस में आपने यू हैव रिकॉर्डेड. सो हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट विद सच ईज? That is because in Marathi we have, it's closest to Sanskrit, और इसमें सभी वावल्स वगैरह सभी अल्फाबेट्स हैं, तो भी मतलब हम किसी भी लैंग्वेज को आत्मसात कर सकते हैं. जैसे कोई जैसे पंजाबी में अड़ो नहीं है, हाँ, तो ऐसा नहीं है, हमारे मराठी में सब कुछ है. दैट्स व्हाई इट्स मच इजियर टू अडैप्ट टू एनी लैंग्वेज. सो आई राइट इट डाउन इन मराठी, and then when I sing I can write the exact pronunciation. That is a big plus. So ma'am, since Marathi is your mother tongue, and recently by the central government, Marathi was included in the list of classical languages, that recognition was given. So how do you feel about it? I feel proud, and a lot of Marathi saints, जो राइटर्स थे, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखे, नॉवेल्स लिखे हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन ह्यूज रहा है, ह्यूज. लाइक ज्ञानेश्वरी, वर्ल्ड वाइड उसकी पूजा होती है, विच इज़ अ ट्रांसलेशन ऑफ भगवद गीता बाय संत ज्ञानेश्वर महाराज. सो इट इज़ समथिंग, मतलब ये देवतुल्य है. तुकाराम गाथा, दैट इज़ ऑल्सो देवतुल्य, मतलब उतना स्टैंडर्ड सारी चीज़ें, वो ऑल दैट हैज़ बीन डन इन मराठी. तो उनको जो दर्जा दिया हुआ है, तो दैट्स वेरी एप्ट. So ma'am, when we talk about Maharashtra, it has been at the forefront of women empowerment, and you being one of the tallest woman artists, what do you think about art? What role can it play in empowering women in, especially in rural areas of Maharashtra? What role can art play in that? Art and music. नहीं, देखिए, you are looking at music as an art. It is just one form of art. But art, अलग अलग तरह का बहुत सारा आर्ट पूरे हिंदुस्तान में, not only Maharashtra. So definitely social media has contributed in a big way in giving them a platform. आज छोटे छोटे रील्स में भी हम देखते हैं कि किसी ने कोई बहुत अच्छी पेंटिंग की है, किसी ने बहुत अच्छी रंगोली की है, किसी ने कुछ किया है. तो ऑल दीज आर फॉर्म्स ऑफ आर्ट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट. सो पीपल आर कमिंग, डेफिनेटली कमिंग फॉरवर्ड. मैम, आपका एक फाउंडेशन भी है, सूर्योदय फाउंडेशन,
which is about water conservation. It's about a lot of things. Okay. We have donated to a school, HIV school in Latur. उनके लिए पानी का काम भी हम लोगों ने किया है. We have built an entire floor for them. And we are still doing that. Then we help students who need education or they need medical facilities. वो भी हम लोग करते हैं. सो मैम, अगर स्पेशली वाटर कंजर्वेशन की बात की जाए, हमने एक फ्लैगशिप स्कीम देखी है, हर घर जल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जल जीवन मिशन के अंडर है, जिसमें पिछले 10 सालों में 12 करोड़ घरों तक पानी पहुंचा है. सो हाउ It's a good initiative. It's a good initiative. मैम, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट the recent infrastructure development in Maharashtra in the last couple of years, especially Mumbai में काफ़ी सारे projects बने. अभी एक मेट्रो का जो एक्वा लाइन का इनॉग्रेशन भी हुआ, कोस्टल रोड प्रोजेक्ट है. I already talk about the roads that I've traveled. Okay. Okay. हाँ, किसका उदाहरण हुआ वगैरह नहीं, वो तो होते ही रहते हैं. But yes, the coastal road is brilliant. It's really, really brilliant because it used to take us hours to reach town, and that is brilliant. मैम, आपने अटल सेतु पे ट्रैवल किया? Yeah. How it's very nice. Very nice. I think Gadkari ji has done a brilliant job. And of course, inspired by Prime Minister Modi. But he's very focused in his work. Ma'am, are you looking forward to the bullet train project to happen soon? It'll be nice. It'll be nice. Yeah. Maybe I would look forward to it more had I been avid train traveler. But I'm not. Would you want to travel? It'll be nice. It'll be nice. Maybe 20 years back I would have loved to. Ma'am, thank you so much for sharing your wisdom with us and for continuing to inspire us all through your music. Thank you. And we loved having you on the Viksit Maharashtra, Viksit Bharat podcast. Thank you so much. Thank you so much for sparing your time.